girls. Today we are going to do the exercises of Unit 3, which is Good Timber, the poem. So I have already discussed the poem with you in quite detail. I have shared almost 3 to 4 videos on it. So make sure that you watch them, because if you don't, then obviously you won't be able to get the gist of it. I have opened comments. If you want to ask any question, please do so. But yesterday when I was watching the views that the videos had, obviously you are 99 students and those views were not reflecting on the video. It means that most of you have not watched it, so please do that. Otherwise, I'm not going to repeat the same chapters again. If the college opens, I'm going to start with the next chapter and I will not revise the chapters that I have done through these online recorded lessons. Now, moving to the exercises, the first exercise that you have is pertaining to vocabulary, in which you have different words related to politics. So I have got this word cloud for you. This is called word cloud. It shows that you have a lot of words which are related to politics. So that is your main word here. And you can see around it that there are a lot of other words which are related to politics as well. So you can see words like politics, democracy, emancipation, methods, ideology, government, decisions, elections, legislature, electorate, democratic. So all these words are related to politics, and this is called word cloud. When you have words which are related to a single field, that whole collection of words is called a word cloud. And your next exercise is actually a reflection of that. Consult dictionary for the following words related to politics and then fill in the blanks with them. So the first is electorate. Electorate means the people who are eligible to vote. The whole population of people who are eligible to vote, जो वोट दे सकते हैं. The second one is referendum. Referendum is a kind of an election, but the answer can just be in yes or no. So usually it is conducted by the government if they are confused about a decision, so they can ask the government whether they think that the decision should be made or no. For example, people can be asked in a referendum that do you think education should be free till university level or not. So there will be just two boxes, yes or no. So you are just going to take one box, or any other similar kind of a poll. But referendum is not like open election and you have multiple candidates and you have to vote them. So this is not like voting, it's a referendum in which you just express your opinion, and the opinion is just on two grids: either you are in favor it or you are against it. And this is regarding some decision or opinion, not selecting people. Propaganda is like a campaign, but usually it is used in a negative term, that when you try to exaggerate something and you are involving media into it and you are trying to create a picture, a very negative picture of something, so that is called a propaganda. Opinion polls are also like elections, but usually one or two questions are given to the people and they answer those questions. Opinion polls are usually conducted before election. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है तो हम लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं, और नीचे 4 5 6 पार्टीज़ लिखी हुई हों और वो जिसको आंसर करें आप उस पर टिक लगा दें. तो अगर आपने 4,000 लोगों से पूछा है तो उसी के हिसाब से यू आर गोइंग टू टेक द एवरेज आउट दैट हाउ मेनी पीपल वांट टू वोट फॉर पार्टी ए, हाउ मेनी वांट टू वोट फॉर पार्टी बी सी डी. सेम हैपन्स कि जब आप कह सकते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो अगेन उसमें हो सकता है कि नॉट एट ऑल, टू सम एक्सटेंट, येस आई एम, आई थिंक दे आर डूइंग वेरी गुड, या एक जो दूसरी एक्सट्रीम हो सकती है कि दे आर डूइंग एक्सेलेंटली वेल. सो पीपल कैन आंसर from these options given, and then some averages and percentages can be taken. The next is parliament. We all know parliament is a place where your elected representative go and sit. It is where the decision making is done, where people pass legislations, constitution, मुख्तलिफ किस्म की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो भी यहीं होती हैं. पोलिंग स्टेशन, अभी इलेक्शन मेरा ख्याल है जो 2018 में हुआ है वो सबको आपको याद ही होगा. सो देर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड वोट. सो दोज प्लेसेस आर कॉल्ड पोलिंग स्टेशन. To vote, we all know, to show your opinion. Campaign ads is advertisement. So campaign ads are when parties make their own campaign material. They try to tell you what they did in the last 5 years, and they made this and this thing, dams बनाए और roads बनाई और सड़कें बनाई और इतने
उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए तो प्लीज़ हमें इस दफ़ा वोट दें। और अगर कोई नए लोग आ रहे हैं तो वो कह सकते हैं कि नहीं, हम आपके आके ये करेंगे और ये हमारा प्रॉमिस है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। सो उसके ऊपर वो कैंपेन एड्स बनाते हैं। उसमें आपका प्रिंट मीडिया भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ सकता है, आपके टेलीविज़न पे भी एड्स आ सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अ कैंपेन एड। ज़्यादातर लोग अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो थ्रू कैंपेन एड्स के लोगों तक पहुंचाते हैं। मेजॉरिटी मीन्स वट एवर side has more people. Policies, we all know what they are. They are a statement of what you are going to do, what you are thinking to do in future. Ballot boxes, आप कॉलेज में भी इलेक्शंस देखते रहे हैं, there is a box और जो बाहर से लॉक होता है and just a slit and the top, and you just write or take something and you put your votes inside. Nobody is supposed to know कि आपने किसको वोट दिया. At the end of it, when the whole process is done, the boxes are open and the votes are counted, and then it is decided that who got the majority. So now I have explained the terms. You can look at the sentences which are given below and you can um, fill them in the blanks on your book. So I hope that there is no problem, because now I have already explained the words to you. Achha, the next grammar topic is pronouns, because in your exercise there are 2 or 3 types of pronouns being discussed: personal pronoun, possessive pronoun, and determiners, जिसको हम possessive adjectives भी कहते हैं. So I rather thought कि I should just give you a recapitulation of what pronouns are. I still hope that at this level you already know what pronouns are. Pronoun is a part of speech. There are total 8 parts of speech. So pronoun is the one which is used. These are words which are used instead of nouns. So for example, for Ali we can say he, or the boy की जगह भी हम he बोल सकते हैं, the girl की जगह she, if there is Sana so we can call it she. For yourself you can use I. So these are called the personal pronouns. I'll just show you the list, and it is done in order to avoid repetition, because it would look very odd if you are writing the name again and again. For example, Ali got up in the morning, Ali brushed his teeth, Ali had his breakfast, Ali left for school. So the constant repetition of the name looks very weird. So in order to make it more natural, pronouns are used instead of names. Now, as far as types are concerned, the most important one is personal pronoun, and as the word personal suggests, that it is used for persons. A personal pronoun is a pronoun that is associated primarily with a particular person in the grammatical sense. When discussing person in terms of grammatical use, the following rules apply. First person के लिए I. So whenever you say ना कि write in first person, so it means that you have to write the whole story as I. I went to the forest and I saw something. When say कि जी second person use करें, तो second person is you, the one that you talk to. And the third person is it, he, and she. These are the people who are not there, but you refer to them when you talk. For example, you can say, I am feeling sick. So, I is your first person pronoun. I am feeling sick. Can you tell the teacher that I won't be coming? So, you is the second person that you are talking to. And the last one say, okay, I hope that she marks my leave on the register. So, when you say she is not there at the moment, but obviously you're referring her as a third person pronoun. Now, as far as personal pronouns are concerned, they are of 2 types: the subject pronouns and the object pronouns. I hope that everybody has done active and passive tense, so we know what subject and object are. दोनों noun होते हैं, subject भी noun होता है, object भी noun होता है. So इसलिए उनके लिए जो हम words use करते हैं, हम उनको subject pronoun या object pronoun कहते हैं. Now, subject pronouns are the pronouns which are used in place of the person who is doing the action. For example, I can say Ali is playing cricket, he is playing cricket. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या आपका मैं नाम लेके कहूँ तो उसकी जगह मैं यू लगा सकती हूँ. बट द थिंग इज़ कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होने चाहिए, वो उन लोगों के लिए होने चाहिए हु आर द डूअर ऑफ द एक्शन, हु आर इनिशिएटिंग द एक्शन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो हैं जो जिनके ऊपर एक्शन अप्लाई हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ गिफ्ट. ही इज़ योर सब्जेक्ट प्रोनाउन बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ गिविंग. Me is the object pronoun because I am the one who is receiving the gift. Okay, same goes with she told them a story. So she is the subject pronoun because she is initiating the action. She is the one who is telling them. And then them is the object pronoun because them are the one who are receiving the action. The story is being told to them. इसका एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि when you are writing simple sentences which are in active voice, the pronouns that come first, they are the subject pronouns, and the pronouns that come after the verb, they are the object pronouns.
For example, she told them a story. So she starts the sentence, so that is your subject pronoun, and she told them. Told आपका verb हो गया, उसके बाद जो आपका pronoun होगा, that is going to be your object pronoun. So you can see the list here. दोनों की forms भी different हैं. When you are going to use the subject pronoun, it is going to be I. लेकिन I me में change हो जाता है जब वो object में चला जाता है. For example, आप ये कहेंगे he gave me a gift. आप ये नहीं कह सकते he gave I a gift. So when it is going to come in the object position, then it is going to change to me. You ही रहेगा. ठीक है. I gave you a letter या you gave me a letter, तो you चाहे शुरू में आए या बाद में है वो एक ही रहता है. He और him हो जाएगा. He told him to follow. She told her to do the work. It ही रहता है. We और us हो जाता है. ठीक है. शुरू में आ रहा है तो we है कि we gave them a ride home. लेकिन अगर हम ही को राइड मिली तो हम कह सकते हैं कि they gave us a ride home. सो वहाँ अगर बाद में ऑब्जेक्ट है तो उसमें us में चेंज हो जाएगा. और they them में अगर they शुरू में है तो they रहेगा सब्जेक्ट प्रोनाउन में, और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जाता है तो them. You can understand them using different sentences. एक्टिव वॉइस में sentences बनाएं और ऐसे बनाएं जिसमें आपके पास दो pronouns यूज़ हो रहे हैं. So then you can see that how it changes. You cannot use the subject pronoun in place of object because that is going to be looking very weird. For example, there's a sentence, she gave her a necklace. So आप ये नहीं कह सकते कि she gave she a necklace. So that is going to sound very funny and not make any sense. अच्छा, ये तो पर्सनल प्रोनाउंस हो गए. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को अलग-अलग भी एक्सप्लेन कर दिया है. पर्सनल प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट pronoun. When a personal pronoun takes the place of a noun as a subject of a sentence, it is both a personal pronoun and subject pronoun. यानी शुरू में आ रहा है. तो अब ये लिस्ट देख लें. I, you, he, she, it, we, they. और सेंटेंसेस भी देख लें कि कैसे बने हैं. I like to play tennis. You enjoy swimming. He wakes up early. She drinks milk. It has a tail. You can speak Spanish. They live in Green Bay. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हैं कि व्हेन द सेम वर्ड्स जो प्रोनाउंस हैं आपके वो ऑब्जेक्ट नाउन की जगह पे आते हैं या उनको रिप्लेस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट नाउन. एंड दे आर हियर इफ़ यू लुक एट द लिस्ट. मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम. और आगे आप सेंटेंसेस भी देख लें. सारा गेव अ टी शर्ट टू मी. जॉन ब्रॉट लंच फॉर यू. द डॉग फॉलोड हिम. ब्रिंग द ट्रीट्स टू हर. जैक पुट वाटर इन इट. It was the first visit for us. The house belongs to them. So when it is going to come at the end of the sentence as an object, तो फिर आप ये वाले forms use करेंगे. Now moving to the next topic जो आपकी बुक में भी है, exercises में भी related है, that is possessive pronouns and determiners. Now determiners is a new term which is used, और basically ये जो American grammar theory है हमने वहाँ से borrow किया है, but otherwise we call them possessive adjectives या possessive pronouns. और दोनों में फ़र्क है. आपको लगता है क्योंकि माई, हिज, हर है तो शायद ये भी प्रोनाउन ही है, बट द थिंग इज़ दैट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. दोनों में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि दे शो पोजेशन. दे शो हु ओन्स द थिंग्स, हु द थिंग्स बिलोंग टू, कि चीज़ है किसकी. ठीक है. लेकिन पोजेसिव प्रोनाउंस जो इंडिकेट है कर रहे हैं पोजेशन, वो दो तरीके से करते हैं. Possessive adjectives are the words with which the noun comes. For example, my bag. सो माई बैग में जो माई है वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है. किसका बैग? माई बैग. तो एक क्वालिटी हो गई उसकी, वो पोजेशन शो कर रहा है. हिज बुक, हर मदर, इट्स टेल, आवर होम, योर स्कूल, देयर लंच. तो ये हमेशा याद रखें कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा किसी नाउन के साथ लगते हैं. ठीक है. वो उसकी पोजेशन शो करते हैं कि हु एक्चुअली ओन्स द थिंग. बट एज फार एज पोजेसिव प्रोनाउंस आर कंसर्न, दे डू नॉट कम विद अ नाउन, बल्कि वो नाउन को ही रिप्लेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ योर्स एंड दैट बुक इज़ माइन. तो दैट बुक इज़ माइन आपने कह दिया तो इसका मतलब आपने पोजेशन शो कर दी, और उसके बाद माइन बुक आप नहीं कहेंगे कि दिस इज़ योर बुक एंड दैट इज़ माइन बुक. वो नहीं होगा. दिस इज़ माइन का मतलब यू आर रेफरिंग टू द बुक. आप फिर उस नाउन को साथ नहीं लिखेंगे. हिज देखने में आपको लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये कि इनका यूज़ डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज़ माइन एंड दिस इज़ हिज. ओके. सो हिज मीन्स उस लड़के की. सो हिज इम्प्लाई करता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, सो यू डोंट नीड टू रिपीट इट अगैन.
hers. Okay, so hers means that girl's possession of something. So the question can be, is it your bag or Amina's? तो आप कहेंगे no, it's hers. हर्स में कॉमा नहीं लगेगा, और हर्स का मतलब है कि जो कॉन्टेक्स्ट में चीज़ चल रही है आप उसी की तरफ इशारा करें. इट्स आवर्स, दिस साइड ऑफ द ग्राउंड इज़ योर्स एंड दैट साइड ऑफ द ग्राउंड इज़ आवर्स. योर्स अगेन, ठीक है, दिस इज़ माइन नॉट योर्स. दिस, प्लीज़ गिव मी माई हैट बैग, इट इज़ माई हैट नॉट योर्स. ठीक है. और देयर्स भी इसी तरह आएगा कि वी शुड लुक आफ्टर आवर वर्क एंड दे शुड लुक आफ्टर देयर्स. बट प्लीज़ रिमेंबर नो कॉमास. ठीक है. और प्लीज़ रिमेंबर कि एज फार एज पोजेसिव प्रोनाउंस आर कंसर्न उसके बाद नाउन नहीं लगेगा. ठीक है. और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में नाउन ज़रूर लगेगा. माई बैग, योर क्लास, हिज बुक, हर, वट एवर, कोई भी साथ आपने नाउन ज़रूर लगाना है. ठीक है. और क्योंकि नाउन के साथ लगता है तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स. ठीक है. और पोजेसिव प्रोनाउंस का मतलब है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह आप यूज़ कर सकते हैं, आपको इसके साथ दोबारा नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है. एग्जाम्पल देख लें पोजेसिव प्रोनाउंस डिटर्मिनर्स की. माई नेम इज़ पॉली एंड आई एम लुकिंग फॉर माई हैट. माई डैड सेज देयर इज़ वन इन द वार्डरोब बट इट इज़ हिज, नॉट माइन. माई मम हैज़ ऑल्सो गॉट अ हैट, लुक द डॉग्स वेयरिंग हर्स. ओके. सो अब इसमें से आई कैन आस्क यू टू टेल मी दैट व्हाट इज़ व्हाट, but I'll give you a hint that if a noun is coming after the underlined word, then it is a possessive adjective, yeah, possessive determiner. But if there is no noun after the said pronoun, then it is a possessive pronoun. For example, my hat. अब my underline है लेकिन my के फ़ौरन बाद देखिए hat आ रहा है. So it is a possessive determiner, या उसी को हम possessive adjective भी कहते हैं. एक ही चीज़ के दो नाम हैं, कंफ्यूज मत हो. My dad says that there is one in the wardrobe but it is his, full stop. There is no noun after his, so this his is a possessive pronoun. Not mine, again nothing is referred, so this is also possessive pronoun. My mum has also got a hat. My mum, my mother. तो my के फ़ौरन बाद आपका एक noun आ गया है, तो इसका मतलब है ये आपका possessive adjective है. Also got a hat, look the dog's wearing hers. Hers के बाद hat नहीं लिखा हुआ. ठीक है. It refers to the hat. So hers here is going to be possessive pronoun. So I hope that it is clear. We are going to move to the exercises. Make possessive determinants जिसको मैं possessive adjective लिखा है and possessive pronoun from the words in the parentheses and then fill in the blanks. So the bus stop is near. We, तो we तो नहीं लगाएंगे तो our में change हो जाएगा. ठीक है. इसमें आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का जहन में ख्याल रखना है. हाउ इज़ योर न्यू स्कूल. ठीक है. हाउ इज़ यू न्यू स्कूल तो नहीं करेंगे ना, तो योर आपने लगाना है. दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़ हिज. दिस इज़ ऑब्वियसली पोजेसिव प्रोनाउन. Sophie's hair is longer than mine, again possessive pronoun. It is my turn now, possessive adjective. The bike is on the right, bike on the right is yours, possessive pronoun. Which desk is ours, possessive pronoun. Here are her tickets. Tickets आ गया, noun लग गया, possessive determiner या possessive adjective. The children brushed their teeth. Their teeth, teeth आपका noun लग गया, possessive adjective. Our school is much nicer than theirs. Theirs ने school को भी replace कर दिया है, उसकी जगह है. So this is your possessive pronoun. Last exercise है, fill in the blanks using personal pronouns in brackets and subject and object form का आपने जहन में ख्याल रखना है. We can phone our grandma and ask her. She तो नहीं लगा सकते ना, she तो आपका object pronoun नहीं है. Object के लिए आपको इसको her में change करना पड़ेगा. Are they your friends? So they लग सकता है, देर नहीं लगाएंगे, ये आप सुनने में भी आपको weird सा लगेगा. Are they your friends? So are they your friends? Subject pronoun लगेगा. She is working on her presentation. Like this is the best example कि दोनों जगह एक ही है person that we are referring to, but when she is in the subject place we call her she, and when then she becomes the object case we call her. She is working on her presentation. Excuse me, can I ask a question. ठीक है. Excuse is a verb. Verb के बाद जब आपका noun आता है तो वो आपका object case बन जाता है. Can I ask a question, तो ये subject I है. They can ride their skateboards. He is his friend. This is not my jacket. Mine was blue. She brought it for her. She bought it for her. Those two cats are ours. We है तो ours में change हो गया.
दे डोंट ईट पोटैटोज बिकॉज दे डोंट लाइक दैम। यहाँ भी देखें आप, दे आपका सब्जेक्ट फॉर्म में भी लगा है और आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी लगा है. So I hope that this clears any misconception that you have, and I'm going to give you some homework tomorrow also at the end of the class. Balki today I'm going to give it to you on Saturday and you have to submit it to me. Later I'm also going to tell you how to do it. आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है कैम स्कैन. कैम स्कैन से आप तस्वीरें खींच के अपने होमवर्क की यू कैन सेंड इट टू मी इन PDF form. I'll make a short video of how you can do it. So it was more like a tutorial video, so you can learn how to send your homework to me while you are at home. And I expect that when there's a deadline, so it is taken as a deadline. If I receive any work after the deadline, obviously I'm going to mark you absent on that. So with that we come to the end of today's lecture. I hope that it is clear. I'm going to open the comments later again. If you have any question, you can ask me. Thank you.